हमारे साथ मंच पर अभी मंत्री महोदय भी जुड़ रहे हैं, परमार साहब महतो जी, and we had the presence of Dr. Saraswat also now, Principal Scientific Advisor and PhD Secretary have been with us since morning. At the outset, I have to perform the ceremonial task of welcoming you all from different states and union territories. And having said that, and without wasting time and without being repetitive, I hope all of you were there in the inaugural session, and if not wholly, at least partly, you must have heard what I said. So that was a broad view. I don't wish to add to that or repeat that. But at least as far as this gathering is concerned, the specific reason why we are here, that is what you should be asking yourselves. Normally conferences like this are held in Delhi for now that since we are holding it for 4 days, so we have festivity along with academics. Normally it's more of a get together, and the friends from the state also come and they club 2 or 3 other activities, also some of the family activities, including looking up boys if they are studying in Delhi or doing some shopping for an upcoming marriage in the family, wedding in the family, all those things. So we have tried to deviate because soon after Prime Minister took over, Modi said, can we move out of Vigyan Bhavan? So that is precisely what we do. We go to a different state, and this time we are in Haryana. Incidentally, though it is proximal to the national capital. Now, see what is, as far as the states are concerned, there are 2-3 observations, because I have seen both sides from the political side as well. It doesn't sound very pleasant, but most of the states do not accord the kind of priority to science and technology as is being given at least by this government headed by Prime Minister Modi. And the buck starts right from the beginning. Nobody wants to be appointed in the Department of Science and Technology. I don't want to make I'm not making any judgment, but I don't know how many of you are actually happy being officers and secretaries in this department and ministry. And sometimes they also feel that the political leadership at that point in time is not favorably inclined to them, and therefore they are being sent to science and technology. So that is the kind of, unfortunately, the contempt and misguided refrain with which this area is being treated. So quite contrarily, because and that will take some time for these states to change, because Prime Minister Modi is known to be a man of making rapid changes and taking revolutionary decisions, and also breaking taboos of the past. So he has accorded highest priority to science technology. And the greatest evidence is that if you go back over the last 10 years, not a single Independence Day you would recall where he has not spoken in elaboration about science technology, which was not happening earlier. Now Dr. Saraswat was referring to Deep Sea Mission. Prime Minister Modi spoke about it for 2 consecutive years, 22, 23, 15th August. He spoke in one of the Independence Day addresses, he spoke about Gaganyaan. The other one he spoke about digital health. The third one he spoke about Swachhata. Then he, in one of his addresses, he spent about 15 minutes talking about Startup India, Stand Up India to many of the Indians who couldn't figure out what it meant. So that is why it is making us difficult to change our mindset and side, both at the level of political leadership in the different states as well as in the executive. So we think this is something which is dispensable, not indispensable. And this, I think, has been the policy of the last 10 years, because every ministry and every department in the Modi government is being guided by science and technology. There is not a single department, even in a small department like pensions, which is quite an inconsequential department from the point of view of the civil servants. We were the first
in the government to use face recognition technology, which was earlier used mostly by the criminals in the crime world. So, because when we found the super seniors beyond 80, their digital biometry also became a little deceptive. So we were the first to introduce that. We produced a mobile app where you could just look into the camera. Within less than 60 seconds, it would generate your Aadhaar authenticated certificate and produce it at the desk of the banker. So we have in last 10 years, and I think rightly so, that is what India has put it in the front row, as I said in the morning. We have made science, technology the backbone of every. In revenue department, which is one of the very rather relatively better choice for most of the bureaucrats, like to be revenue secretary. Because you find everybody hanging around, and then the day before you get posted out, you also have a piece of land at your backyard. So, because I have been in all these sectors, so I can. But here, the Patwari has been made out of a job. The beautiful Swamito program I was referring the morning is being quoted all over the world. The entire mapping, what Patwari was doing, is being done by drones, space technology. He doesn't figure anywhere. The citizen does it on his own. So similarly, I think whether it's smart cities, roads, buildings, railway lines, you name any sector, infrastructure development, it is the latest technology which is at work. And at least the current group of secretaries that we have at the center is among the best of the scientists, nationally and internationally known. Dr. Karendikar is an expert in AI and one of the first to have actually ventured into this. He was somewhere looking for something in USA, and I made a phone call. I said, "What are you doing?" So he got him back here. I said, "You'll add to your profile, spending 3 years here." And Rajesh Gokhale is the man behind the vaccine, one of the best young biotechnologists we have. PSN is teacher of teachers. Professor Sood has produced 2 generations of eminent scientists from the oldest institute, the Indian Institute of Science in Bangalore. So, and DG CSIR, the first woman DG, an expert in lithium, which is incidentally going to be now explored in North India, in the Riyasi district of Jammu and Kashmir. So it's such a high prioritization being given over here. So I hope first, my humble submission is that you at least understand the esteem of being part of this department. Because sometimes we क्या करें अब डाल दिया हो. No, because I worked in state, I worked in center, I worked in private sector, I worked with almost all the multinationals as the advisory. I was also very active in the private sector after having quit my government job. So I've seen all the world, and I can tell you that. Because in the times to come, this is going to be one of the most enviable assignments. Because all other assignments which today sound lucrative are going to fetch zero lucration. Whether it is revenue, whether it is, well, nothing is going to be in your hands. The rural development, entire thing is going now DVD. So this is something which is going to be the control room of the entire government machinery. Secondly, you can actually contribute if you are able to. Also, I said we could, what we did in the beginning in 2015, even in Government of India, most of our ministries were not aware of what the technologies available. So we did a 3 days of brainstorming, which the states could do. I suggested to some of them, many of them don't find time for this. So we did 3 days of brainstorming. We put space technologists, space scientists, to sit down with different ministries, representatives of each of the different ministries, so they could know. There were a series of railway accidents happening at one point in time. I told them, do you know, through space technology we have means we can identify a potential obstructing object 15 kilometers ahead and giving enough time to the driver to apply his brakes. So why don't you use this? But they were not aware.
Then, if your water resource, which is now Jal Shakti, they were looking for a machine from Israel to get the sewage water. I'm talking a long time ago. We had already installed one, and that too in the colony of the bureaucrats. Motiwal. So, first we did that. That's how we started. And it proved to be very beneficial, very useful. I think one thing which can be done by you all also, you could take the initiative that would also give you some kind of a leadership or prominence among your peers, provided the political leaders allow you to do that. That is why we are soliciting the honorable ministers here, और जैसे सकलेचा जी हैं, परमार जी हैं, पहले से इनको विज्ञान के प्रति इतना रुझान है, तो इस तरह का अगर ये करें गोष्ठी, तो मुझे लगता है कि अभी जो राजनीतिक हमारा नेतृत्व है वो भी काफी सहयोग करने के मूड में है, barring some of the places which will also change. दूसरा, more of interaction with this center. पिछले साल जब हमने अहमदाबाद में किया तो बहुत से सेक्रेटरी साइंस के from different states, they said we didn't know that this was there. Whereas anybody for anything who goes to Ahmedabad should make one visit to Science City. I suggested that to tourism ministry also. I said, what do you do? आप लोगों को क्या समझाते हैं? हम समझाते हैं कहाँ जाना? मैं कहाँ जाना? मैं ताजमहल तो वैसे ही जाएगा डियाना डेस्क पे फोटो खींचने, आप कहें कि ना कहें, लाल किले भी जाएगा। आपको समझाना है कि जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, हमारी नेशनल फिजिकल लैब है 1947 में, हवा प्रसाद मुखर्जी ने, वैसा वही एक लैब है जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो जिम्मेवारी आपने हमें दी है, जो उनके हाथों से जिसको शुरू करवाया गया था। वी हैव हिस्ट्री मेड इन इंडिया। साइंस सिटी जो अहमदाबाद का है, दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसमें डिस्प्ले नहीं है, एंड दे हैव कलेक्टेड फिशरी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम अफ्रीका डाउन टू कश्मीर। सो इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो एक तो हमारा ही अगर आपस में हमारा इंटरेक्शन रहेगा तो क्या क्या नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, at least we will get to know that. Third, most of the states, I think more and more, gradually we are also trying to sensitize. Many of these states are already very cooperative in this. जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, to an extent Maharashtra. They are quick to adopt, only they have to be informed. वरना क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां से सक्सेस स्टोरीज आर गेटिंग बॉर्न बट दे आर नॉट बीइंग अडॉप्टेड लोकली। अब आपका रोमा मिशन शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर से, गुलमर्ग और भद्रवाह से, उत्तराखंड पहुंच गया और नागालैंड पहुंच गया, हिमाचल पहुंच गया, लेकिन वहां इतना फैल नहीं रहा था। तो वो CSIR के ही माध्यम से हमने उसको बिलावर और दूसरी जगहों में फैला। समटाइम्स लैक ऑफ अवेयरनेस, समटाइम्स वो इसलिए हो रहा है कि वी हैव 37 CSIR इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। वी हैव 14 बायोटेक इंस्टीट्यूट जिसको अब इन्होंने एक सिंगल अम्ब्रेला में ले आया। वी हैव ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ DST इंस्टीट्यूट, बट जिस शहर में वो है उस स्टेट के लोगों को उसका पता नहीं है। आपके यहाँ पर जो CSIR का इंस्टीट्यूट है, हमारे कम से कम तीन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो वी हैव डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट, 3 इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू मेडिसिन। फॉर एग्जांपल CSIR लखनऊ, CSIR जम्मू, and the CSIR another one I think is Singh. So they are dedicated, and they have done some world class research. Mint came from Lucknow and Jammu. दुनिया सारी ने खाई। आपके बगल में मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ KG मेडिकल कॉलेज है लखनऊ, जो अंग्रेज बना के छोड़ गए। यहाँ पे जो हमारी CSIR है जम्मू III में, उसके 3 किलोमीटर दूर आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है सरकार का, एक दूसरे कभी नहीं मिले। When I went there, they were working on a drug-resistant tuberculosis drug. So I said, do you have, and that is what we can do now. I said, have you collaborated with the medical institution? We have not met. So I sat there. I requested the dean of the medical institute to come. She took some time because she was short notice.
Then I suggested, why don't you have a research thesis on this? आपके यहाँ फार्माकोलॉजी का MD होता है, आपके यहाँ MD मेडिसिन है, आप उसको जोड़िए, गाइड अपना रखिए, UGC says गाइड फ्रॉम द पेरेंट इंस्टीट्यूट, को गाइड फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट, हमारा को गाइड पिछले 2 साल से अब they have started. So this is how we can. So that problem is we are not availing of what is around us. दूर जाने का नहीं है. Similarly, even here we had an MOU with AIIMS. हमारा जो न्यूरोलॉजी का इंस्टीट्यूट नहीं वो तो हमारा दिल्ली का NBR बायोटेक का ब्रेन यही पास ही है, उसका और एम्स का MOU है. लेकिन MOU क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच nobody understands and nobody memorizes. आप उसको पूछो किसी को MOU में क्या क्या है, अब देखिए 9 out of 10 times he would not know. It is only for exchanging and taking a photograph. And memory भूल जाता है. We had MOU, but उस MOU was limited के बीच में से हमारे कुछ डॉक्टर्स एम्स से वहां जाते थे. मैंने उनसे कहा कि आपका न्यूरोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएट बेहतरीन है. अब तो डॉक्टर वो प्रभा छोड़ गई जब से वो सुपरसीड हुई पूजा, शी रिजाइन. वहां पर DM का डिसर्टेशन बनता है, DM कोर्स का, वो किसी को दीजिए ना लड़कों को. अब उन्होंने शुरू किया. आपका जो ब्रेन टेक्नोलॉजी बहुत डायग्नोस्टिक्स का वहां पे है एंड इवन थेराप्यूटिक, दैट इज वर्ल्ड क्लास, लेकिन हम उसको अवेल नहीं कर रहे. तो हम एक कम से कम आगे पीछे तो इंटेग्रेट करें ना. इट साउंड्स गुड. अभी मैंने मॉर्निंग में भी कहा, बट आई कुड नॉट हैव गॉन ऑन. वी आर नॉट इंटेग्रेटिंग इन द ट्रू सेंस बिकॉज वी डोंट रियलाइज द बेनिफिट वी गेट आउट ऑफ दिस. देयर इज अ ह्यूज बेनिफिट इन्वॉल्वड इन दैट. इसी तरह से हमारा एग्रीकल्चर में है. एग्रीकल्चर का लगभग 6-7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको मैंने खुद मंत्री जी को निवेदन किया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम सब्जी की लाइफ भी लंबी कर सकते हैं, पैदावार भी दुगनी कर सकते हैं, और उसको एंड वी हैव 2-3 टेक्नोलॉजी. उसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी उसमें काम कर रहा है. अब यहाँ पे हमने शुरू किया, हर महीने सारी साइंस मिनिस्ट्रीज की इकट्ठी मीटिंग होती है, सारे 8-10 की. वो भी हमने शुरू किया. नहीं तो जो इसरो का चेयरमैन है उसको यहाँ परिचय ही नहीं था, पता ही नहीं था लोगों को साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी कोई होता है, क्योंकि वो बंगलौर में रहते थे. उसमें एग्रीकल्चर के लिए लेकिन किसी स्टेट ने अभी तक कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. मेरे को लगा थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में हुआ, क्योंकि वो मिलिटेंसी के दौरान वहां पर वो सेब वगैरह की दिक्कत आई, तो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए और इतनी होनहार युवा महिलाएं, उनको हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी सपोर्ट दी. सेब की पैदावार डबल हो गई, लाइफ डबल हो गई, और वहां से मांग आई कि आप इसको दिल्ली और नागपुर की मंडियों तक पहुंचाइए. और उसकी फिर व्यवस्था की गई. हमने जहाज वालों को कह करके सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन का किया. लेकिन हमने एक मंत्री जी थे एक प्रदेश के, वो मुंबई किसी काम से गए थे, हमने उनको आमंत्रित किया भावा सेंटर कि वहां हम आपको दिखा देंगे थ्रू एटॉमिक एनर्जी हम कर रहे हैं. और फिर हमने उनसे निवेदन किया कि आप 2-4 ऐसे लोग वहां से भेज दीजिए, यहाँ से प्रशिक्षण लेके वहां जाए. लेकिन वो मंत्री उसके बाद चले गए, उनको याद नहीं रहा. 1.5 साल के बाद सरकार भी चली गई, तो किस्सा ही खत्म हो गया. तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि दिस स्पेसिफिक ग्रुप, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो, यू आर अ लर्नड ऑडियंस and you have seen many ministers coming going, so not have to that, so that you don't have I don't want you to leave with a good joke for the evening banquet when all of you sit together. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक ग्रुप की क्या जिम्मेवारी है और किस भाव से किया गया है कि इसको आगे तक पहुंचाया जाए. और बहुत काम हो रहा है. हमारा डीप सी मिशन है, 12 स्टेट्स हैं, जो 12 स्टेट्स आपकी कोस्टल है, उड़ीसा से शुरू होके या आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, क्या कुछ नहीं कर सकते आप. वहां पर कलेक्टर ही अगर करना शुरू कर दे तो ही बिकम अ सेलिब्रिटी. हमने स्वच्छता अभियान पिछले साल किया था समुद्र का. आप कहते हैं अब सभी जगह शुरू हो गया, अमृतकाल 25 साल, अमृतकाल 25, आप भी कहते हैं, मतलब हाजिरी लग जाती है इससे कि ऊपर से आह्वान आया है स्टेट को, तो आप भी सबको बोले जा रहे हैं 25 साल अमृतकाल. कभी आपने ये पूछा
आप पढ़े लिखे हैं, आपने हमको सिखाना है। नेता को तो टॉकिंग पॉइंट दिए जाते हैं ना, आप ही के पढ़ता है वो भी। आपने हमको सिखाना है कि भाई ये 25 साल में कैसे बनेगा अमृतसर, कहां से वैल्यू एडिशन होगी हमारी इकोनॉमी, वो होगी इन 12 स्टेट से। और उसके लिए हमने क्या किया, हमने समुद्रयान शुरू कर दिया। अगले साल 2025 में जब गगनयान जाएगा तब हमारा एक भारतीय मानव 6000 मीटर जो मैक्सिमम सी डेप्थ है वहां तक जाएगा और वहां के सारे खोज के लाएगा वो संपत्ति, मिनरल्स, मेटल्स, बायोडाइवर्सिटी। अभी तक आप माइनिंग में इलीगल माइनिंग चेक करते थे, अब नीचे करनी पड़ेगी, वो जल्दी जमाना आने वाला है। वहां से वैल्यू एडिशन होगी, वो हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन है, उसको 70 साल किसी ने देखा नहीं। मोदी जी के आगे बात रखी गई तभी उन्होंने डीप सी मिशन लाल किले से हुआ। दूसरा आपका हिमालय, ये 3-4 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, ये जो आपका रोमा शुरू हुआ है, जिस नीचे आपने देखा भी जो CSIR-DG कह रही थी कि 3000 स्टार्टअप्स आ गए, ये वैल्यू ऐड करेगा हमारी इकोनॉमी में। बाकी सारा तो एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए कितनी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है टू कंट्रीब्यूट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस फॉर्मल 4 दिन में आपको जो व्हाटएवर यू आर एबल टू gain or extract, you are welcome to do. After that also, you are welcome to be informally in touch with us, and just if you can appoint some nodal officer from each of these states who could actually coordinate. And here then we will be able, because now we are all functioning in an integrated form. Science, DST भी, DBT भी, CSIR भी, अर्साइज भी, वी हैव जॉइंट मीटिंग, वी सिट जॉइंटली। PSA साहब को भी हमने उसी तरह का, अदरवाइज PSA साहब का रोल पहले था कि मोस्टली अपने जगह वो रिसर्च करते थे, सो वी हैव इन्वॉल्व इन अ बिगर वे। तो अगर आप यहाँ से कोई अपना नोट रखेंगे तो हमारे यहाँ वो दे कैन गेट इन टच एंड वी कैन बी एबल टू गाइड देम और प्रॉम्प्ट दें कि आप वहाँ से वो चीज़ लीजिए, एंड यू कैन शो केस इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स UTs. दैट इज I think primarily what you can do. अब जब PM बनने के बाद सबसे पहला जो प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम हुआ वो हुआ कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का उद्घाटन। अभी 1-1.5 महीना हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही मोदी जी ने कहा कि इतना बढ़िया सनशाइन और ये रेलवे स्टेशन पे अभी सोलर नहीं लगा हुआ। It was so embarrassing कि कोई आगे बाहर से हमें समझा रहा है, ही इज नॉट ए मैन ऑफ साइंस। लेकिन हमारे यहाँ और वाकई फिर उस पर अमल हुआ, इट बिकेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द कंट्री टू बी कन्वर्टेड टोटली ऑन सोलर। और उसके बाद तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन, तो इतना कुछ है which even at the level of a collector one can contribute if you inspire the officers under you and widen your role। तो हमारा वही निवेदन है कि जो काम यहाँ हो रहा है उसका आप भरपूर लाभ ले सके और आगे भी जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचा सकें। बाकी जैसे जैसे बात आएगी तो चर्चा करेंगे। PSA साहब हमारे यहाँ पे उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद।